Hello everybody, welcome back to my channel, and in this video we will be talking about the education loan and which loan I went for and why I went for and how much did I pay the charges of like the processing fee and all that, and how it works. So I explored a lot. I mean, I was when I was processing my applications, I was looking out for multiple loan options, but more or less what I found, every bank is same. Like when we go for the government banks or the private sector, तो गवर्नमेंट बैंक्स आर लाइक स्टेट बैंक हुए या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट एसोसिएटेड बैंक्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट रेट कम थे, बट देयर प्रोसेस वाज लिटिल लॉन्गर एंड आपको बार बार बैंक विजिट करना पड़ता. तो दैट वाज वन थिंग कि आई व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू प्रोसेस माय लोन faster, so I just thought I should go for private bank, but private bank के interest rates थोड़े ज़्यादा थे as compared to the government bank. So this is one main difference कि अगर आप बार बार जा सकते हैं बैंक को और आप अपना प्रोसेस के लिए ओके हैं, तो आई वुड से कि आप अगर स्टेट बैंक से अगर लेंगे तो इट्स बेटर. बट द अदर इशू इज़ कि स्टेट बैंक आप इन फ्यूचर भी आपको कोई वहाँ पे जाना होगा डिस्पर्समेंट अमाउंट के लिए, बट अगर आप एक शॉट में अमाउंट ले रहे हैं लाइक लेट्स से अपने अकाउंट में, तो फिर मे बी प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाए. बट आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दी स्टेट बैंक प्रोसेस एंड टू एंड बिकॉज आई डेंट गो फॉर इट. बट हाई लेवल जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी स्टेट बैंक और अदर प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक और अदर प्राइवेट सेक्टर वॉज दिस यू हैव टू द प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा आपको ईज आउट हो जाएगी, ईजी प्रोसेस हो जाएंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जाते हैं. सो दिस वॉज वन रीजन वाई आई डिड नॉट गो फॉर गवर्नमेंट बैंक. टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट, तो येस इट इज़ हायर ऑन दी प्राइवेट सेक्टर, बट जब आप व्हेन यू सो डॉलर रेट इज ऑलवेज गोइंग हायर, तो बट आप जब रिटर्न करेंगे तो वो गैप थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा. दैट वाज माय कैलकुलेशन. बट अगेन it depends because you never know how the economy is and how much difference it is. But I thought कि ठीक है, कुछ परसेंट के जो difference हैं I'll manage, but I wanted faster process and time नहीं था कि I just go bank for every because I was working also that time, so I used to have my office and then I used to process to work on my applications and all that. So this was very first reason why I did not go for government bank. Now which private bank I chose? I chose for HDFC Credila because I had dealt with a lot of processing with HDFC previously, and I'm not saying HDFC is really good, but India में अगर आपको कोई options देखना है तो I think HDFC has huge market and large market. तो आप अगर HDFC, इसलिए मेरी प्रायोरिटी थी. अदर बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक और भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं दे डू ऑफर, बट माई पर्सनल चॉइस वॉज HDFC Credila because मुझे लगा कि HDFC हैज़ द मार्केट, सो प्रोसेस थोड़ा ईजी होगा. बट ऑब्वियसली प्रोसेस वॉज नॉट, बैंक प्रोसेस विल बी ऑलवेज लिटिल इट अनोइंग, बट this was the reason I thought कि अगर HDFC भी it's annoying तो other banks भी वैसे ही रहेंगे, there is not much difference. So I went with HDFC because मुझे ये था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था. I had only few minutes left और I did not want to take chance कि मैं रिस्क लेती रहूँ सब जगह. और एंड ऑल्सो जब आप एप्लीकेशन डालते हैं एजुकेशन लोन के लिए तो देर आर प्रोसेसिंग फी. तो जैसे लेट्स से इफ़ यू हैव टू गो फॉर 40 lakhs लोन, तो आपको उस कुछ 10% के अराउंड आपको प्रोसेसिंग फी देनी होगी, which is like 40,000. So HDFC में it is like कि they will tell you first कि are you eligible for this amount of loan or not, and they'll give the पूरा application का analysis कि आपको कितना लोन मिल सकता है, collateral based on collateral, non collateral, and also they tell you the interest rate and everything. उसके बाद you have to pay the processing fee. But कुछ banks क्या करते हैं कि they will make you pay processing fee. Doesn't matter, like they'll not reveal anything कि आपको कितना interest rate देना है और like आपका लोन अप्रूव हुआ या नहीं, अगर कोलैटरल जा रहे हो आप नॉन कोलैटरल जा रहे हो. तो कोलैटरल नॉन कोलैटरल में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो एक गारंटी होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट उनके पास रखना होगा. इफ़ यू आर नॉट कीपिंग दैट, तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है. और दूसरा उसके बाद व्हाट दे सी इज़ कि अगर आप
लेट्स से आपके पास कोई एसेट नहीं है उतनी वैल्यू का जो आप दे सकते हो बैंक को, इन दैट केस यू पे लिटिल हायर इंटरेस्ट रेट, लाइक 1 to 2% का होता है। और दूसरा दे लुक इनटू योर कंप्लीट प्रोफाइल कि आपका जीपीए कितना था, जीआरई कितना था, आपका इंडिया का यूनिवर्सिटी कैसा था, देन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर, लाइक हाउ इज दैट, जो भी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी, विच कंट्री यू आर गोइंग फॉर, एंड विच डिग्री यू आर गोइंग फॉर, और उस यूनिवर्सिटी का हाउ इट इज लाइक फ्यूचर, मतलब उनका एवरेज पे सैलरी क्या है, विल यू बी एबल टू पे बैक योर लोन और नॉट। तो उस सब क्राइटेरिया के बेसिस पे they'll approve your application. If not, they won't be considering it. So this was very one thing which is difference between the collateral and non-collateral. Most students go for non-collateral because it's a huge amount and वो कोई property generally they avoid, but few students consider giving going for collateral, and they तो collateral में आपका process थोड़ा सा increase हो जाता है like a bit, because documentation ज़्यादा लगते हैं compared to non-collateral, because you are giving some asset, तो वो asset की पूरी check होगा और उसके आपको पूरे details देने होंगे, तो वो एक स्टेप बढ़ जाता है। अदरवाइज प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कोलैटरल और नॉन कोलैटरल में। तो दैट इज वन थिंग। और आपका इंटरेस्ट रेट बचता है अगर आप कोलैटरल जा रहे हो, बट अगर आप नॉन कोलैटरल जा रहे हो तो यू आर इंटरेस्ट रेट लिटिल हायर। So this was one difference, and another thing what happens is कि जब आपका approval आ जाता है HDFC Credila से, so then what happens, you will have to pay the processing fee. तो processing fee वो generally 10% रखते हैं on the loan amount. Doesn't matter how much disbursement you are taking. कि let's say आप 40 lakhs loan के लिए जा रहे हो, but you are taking only 20 lakhs, तो processing fee 20 lakhs पे नहीं लगेगी, 40 lakhs की परसेंटेज पे लगेगी। बट यू कैन बार्गेन ऑन दैट, मतलब आप कन्विंस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और आपके लोन मैनेजर के ऊपर होता है कि हाउ मच ही इज विलिंग टू हेल्प यू, एंड बट इस पे बार्गेनिंग हो सकती है अगर आप ट्राई करो तो। आप इट डिपेंड्स, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दे विल डू इट, बट इट डिपेंड्स कि आपका मतलब कैसा प्रोफाइल है और बैंक के उस फंडिंग्स पे क्या है, और इट इज़ लाइक लॉट ऑफ बैकग्राउंड conditions comes in place too, but it's not guaranteed. So the maximum is 10%, but it is like up to 10%, and depends ki how much they are charging you. So this was another thing. Once your loan gets approved, you'll have to pay the processing fee. जब processing fee आप pay कर देते हो, उसके बाद आगे का process start होता है। तो then so HDFC Credila is not there in all the cities, like it's only there in the metro cities. So जैसे मैं mid town city से हूँ, तो मेरे सिटी में HDFC Credila नहीं था। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंड कि इट हैज़ टू कम थ्रू मेट्रो सिटी, तो वो मुझे कुरियर करते थे, एंड देन आई यूज्ड टू कुरियर देम बैक। तो वो थोड़ा मुझे टाइम लगता था, लाइक गेटिंग द एप्लीकेशंस, गेटिंग इट साइन, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी लिस्ट आती है, वो लगाना होता है आपको, उनके बाद उनको भेजना होता है, फिर वो अपने तरफ से करते हैं। या समटाइम्स इट इज़ लाइक अगर आपके लोकल है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, दे सेंड समवन टू योर हाउस, और मे बी यू कैन गो टू द ब्रांच एंड देन जस्ट वेरीफाई। बट सिंस मेरा कुरियर के थ्रू चल रहा था, तो हर प्रोसेस में टाइम लग रहा था, बिकॉज पहले मुझे कुरियर आता था, फिर मैं उसको भरती थी, फिर मैं उनको सेंड करती थी, तो वो 1 वीक का प्रोसेस हो जाता था। तो दिस इज वन थिंग। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका सब कुछ अप्रूव हो जाता है पोर्टल से, लाइक फाइन, ये आफ्टर योर प्रोसेसिंग फी का प्रोसेस होता है, तो उसके बाद व्हाट यू डू इज लाइक यू विल हैव टू पे वन इंश्योरेंस। मतलब क्यों आपका एक, जैसे आपने जितने का भी लोन लिया उसका एक इंश्योरेंस कराते हैं कि लेट्स से समथिंग हैपेंस, तो हु इज गोना पे योर, बिकॉज इवन फॉर दी, सो व्हाट हैपेंस इज इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द नॉन कोलैटरल, दे नीड सम गारंटर, लाइक योर एनी रिलेटिव और योर पेरेंट्स, और ये कि कोई गारंटर उनको चाहिए। इट्स नॉट लाइक वो बोलते हैं नॉन कोलैटरल, बट दे नीड सम गारंटर, और वो गारंटर अगर आपके पेरेंट्स बन रहे हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनके भी सिग्नेचर्स वगैरह लगते हैं। and then they ask you to pay some insurance amount, so I pay somewhere around I think 40,000 or 30,000, I don't remember the exact figure, but if any information is required on that, I can always check my documents and give the exact figures, but some amount you have to pay for the insurance ki aapka as a premium, which is one time for the full amount, ki if in case any mishap happens. So and then mishap is not like your job goes or you're not able to pay, it's like something with the life or some accidental वैसा कुछ सीरियस वाला होता है। आई डिड नॉट गो इनटू डिटेल, बट इट्स एन इंश्योरेंस। सो ऑन द अमाउंट कि आपके जो गारंटर रहेंगे उनके ऊपर बर्डन नहीं आए फ्यूचर में, एंड योर लोन गेट्स क्लियर्ड और क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो दैट इज वन अनदर चार्ज यू हैव टू पे। तो जो दो मेन इंपॉर्टेंट चार्जेस लगते हैं वो प्रोसेसिंग फी होती है, एंड देन योर
इंश्योरेंस अमाउंट बेस्ड ऑन योर लोन अमाउंट। तो आपका जितना भी लोन अमाउंट होता है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये फंड्स आपको देने होंगे, आपको प्रोवाइड करने होंगे। यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द लोन अमाउंट। सो दिस इज वन थिंग विच यू विल हैव टू कीप इट विथ यू सो दैट इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसेसिंग। So this is one thing, and then once you are done with the insurance payment and all that, उसके बाद आप उनको अपनी requirement के हिसाब से amount कराओगे। But what generally happens is they will process or they will disperse the amount only for 1 year, 1 year की फीस के हिसाब से, they'll not give you full amount. So that's how the HDFC Credila works. They gave me for 1 year और उसके बाद you'll have to ask them कि next year के लिए we need more funds or not, but वो एक year के हिसाब से like almost जितना भी लोन अमाउंट होता है उसका 50% देते हैं, और जो भी आपका अमाउंट डिस्पर्स होगा आपके अकाउंट में उसका इंटरेस्ट। सो एजुकेशन लोन में बेसिकली what happens is कि you're not paying any EMI immediately. So let's say for home loans and other loans you have to pay the EMI the month or 2 months later, but for the education loan there is a buffer period of like your degree. So let's say my degree is for 2 years, then my loan will start 2 years plus 6 months का एक buffer gap होता है, which is our choice. अगर आप 2 years के immediately आप पे करना चाहते हैं you can start paying, or else they give you 6 month buffer, so आप उसके बाद भी पे कर सकते हो once you start working. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने लेट्स से दो साल का बफर रख लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बैंक ऑलवेज विल मेक यू पे अ प्री पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, विच स्टार्ट्स गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम योर गारंटर्स अकाउंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑफ द डिस्बर्समेंट। तो लेट्स से अगर मैंने दिसंबर में डिस्पर्स किया अमाउंट फॉर रफ इफ आई डिस्पर्स 30 lakhs, तो उस 30 lakhs पे जो प्री पेमेंट होगा इंटरेस्ट का वो मेरे गारंटर के अकाउंट, बिकॉज इवन इफ नॉट कोलेटरल आई हैव टू गिव सम गारंटर, उनके अकाउंट से डिडक्ट होगा एवरी मंथ। सो इट डिपेंड्स, इट कैन गो टू 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ, बट इस तरीके के अमाउंट बेस्ड ऑन द लोन अमाउंट। अगर आपका लोन जितना ज़्यादा रहेगा आपकी प्री पेमेंट भी उतनी बढ़ती जाएगी, तो इट ऑल्सो गोज अप टू 8,000, 10,000 ऑल्सो इफ़ योर लोन अमाउंट इज ह्यूज। बट अगर आपकी कम अमाउंट है तो इट विल बी बेस्ड ऑन दैट, बट वो अमाउंट डिडक्ट होती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो आपका हर महीने डिडक्ट होगा। दे वोंट गिव यू वेवर और एनीथिंग कि आप बोलो हम बाद में पे कर देंगे विद दो, दे वोंट लिसन टू दैट। दे विल मेक यू पे राइट फ्रॉम द next month, and that's how I think every bank does that. It's not just HDFC Credila, it's like with every bank there is a prepayment, like you have to pay a little bit, और ये जो amount आप pay करते हो that is from the interest. They retrieve interest first, and that's the नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लोन। एनी लोन यू आर टेकिंग तो पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, उसके बाद प्रिंसिपल जाता है। तो दिस सेम इज विद द एजुकेशन लोन एज वेल। वो पहले आपका इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे एंड देन इट स्टार्ट्स विद द प्रिंसिपल लेटर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, व्हेन यू स्टार्ट। तो अभी जो 2 साल 2.5 साल जितना भी आप टाइम लेते हैं सिंस यू स्टार्ट बिफोर यू स्टार्ट पेइंग योर एक्चुअल अमाउंट, तब तक के लिए दे डिडक्ट जो भी इंटरेस्ट, और ये आपका जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा इन 2 years 2.5 years वो आपके मेन इंटरेस्ट से रिड्यूस हो जाएगा। बट आपको ये 2 साल का भी इंटरेस्ट लगता है, लाइक 2 साल में अगर आपने 20 लाख से 30 लाख अमाउंट निकाले हैं तो इट्स नॉट दैट यू आर गोना पे देम आफ्टर 2 years के बाद उनका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, नहीं, उनका जो टाइम होता है वो कैलकुलेट होता रहता है एंड इट गोज इन टू 1 year 2 year। आप जितने देर तक रखेंगे वो पैसे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगते जाते हैं प्रिंसिपल पे। So this is one thing about another thing about the education loan, and how disbursement work is like you have to write them a mail, or like for HDFC Credila, in my case what happened, they gave amount to the account and then we paid the fees to the this university for my semesters. So they have a team for the foreign exchange, they help you with that, or uske liye they don't charge anything. The only thing they charge is the currency rates and all that, जो भी वायर ट्रांसफर होते हैं उसके चार्जेस लगते हैं, और आपके बैंक जो भी चार्जेस करते हैं। बट देयर इज अ टीम सिटिंग देयर एंड दे हेल्प यू आउट विद द process of the transfer, and yeah, this is all about the education loan from the HDFC Credila. I hope this video would have helped your education loan process. Thank you for watching.